हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं लॉगिन व्यू कंट्रोल। ये कंट्रोल बेसिकली क्या करता है कि आपका जो लॉग्ड यूज़र है या जो भी यूज़र लॉगिन है, दैट विल द नेम ऑफ द यूज़र विल बी डिस्प्ले ऑन दिस पर्टिकुलर कंट्रोल। यस, सो इट विल डिस्प्ले द करंट यूज़र जो भी अभी लॉगिन हुआ है। यस, उससे रिलेटेड मेथड्स अवेलेबल है। पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कंट्रोल्स। यस, इट एक्सेस द control collection object containing the child controls of the for the login view controls. Yes, control क्या है? We can say it is a collection object. Yes, जो दूसरी सारी properties and method contain करेगा related to the login view controls. Enable theming. Yes, it access to specify the value indicating the themes टू बी अप्लाइड टू द कंट्रोल। यस, कौन सा थीम अप्लाई होना चाहिए लॉगिन व्यू कंट्रोल पर, तो वो हम यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। यस, रोल ग्रुप्स, इट एक्सेस द कलेक्शन ऑफ रोल ग्रुप्स एसोसिएटेड विद द कंटेंट टेम्पलेट्स। यस, अगर आपने कोई भी यूजर को रोल दिया है या पर्टिकुलर एडमिन साइड है या गेस्ट यूजर है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सेस करेगा। Next one is the data bind. This method bind your information from the data source to your control. Yes, on view change and on view changing. These are the before and we can say after and before event. ये दोनों event कब fire होगी? जब भी आपका login view control change होने के बाद या होने से पहले ये दोनों event fire होगी। Yes, so same event will be display here. We can say these are the login view control. You can see the login view control, how the login view control will be display. Yes, you can edit the role of the login view control. Third one is the login status. Yes, the login status control basically we can say it will display logged in or logged out. Yes, we can say two status. It can display two status, either the logged in, either a logged out. Yes, we can set when the particular login will be display or logout will be display. It is a one kind of hyperlink it will display. Yes, and you can also set the URL for the login where to go and for the logout where to go or jump. Yes, so for that we have two methods or events. Yes, I can say that these are the events also, so I can remove from this. Okay, login image URL. Yes, it access, these are the property. Yes, it access or specify the URL of the image used for the login link. Login text, it access the text added to your login link. यस, आप यहाँ पर कोई भी लॉगिन टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हो बाय एंटरिंग इन दिस प्रॉपर्टी। लॉग आउट एक्शन, यस, यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली इट रिट्राइव्स द वैल्यू फॉर द डिटरमाइनिंग द एक्शन व्हेन द यूजर लॉग आउट द वेबसाइट। यस, लॉग आउट पर कौन सा एक्शन करना चाहिए या क्या होना चाहिए, दैट विल बी डिटरमाइन हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। लॉग आउट टेक्स्ट, लॉग आउट का टेक्स्ट क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आप रख सकते हो बाय सेटिंग दिस प्रॉपर्टी। यस, इवेंट अवेलेबल है लॉग इन आउट एंड लॉग्ड आउट। वी कैन से ये इवेंट कब फायर होगा, व्हेन द यूजर सेंड्स लॉग आउट रिक्वेस्ट टू द सर्वर। यस, जब भी यूजर सर्वर पर लॉग आउट रिक्वेस्ट भेजेगा तब ये इवेंट फायर होगा। ये इवेंट लॉग्ड आउट कब फायर होगा, व्हेन यूजर इज लॉग्ड आउट, और लॉग आउट का जब भी प्रोसेस होगा तब जाके ये इवेंट फायर होगा। ओके, ये सारे जो कंट्रोल है वो कुछ पढ़ने के इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे डेट व्हाट द सिलेबस विल इंक्लूड, वी कैन से लेट अस सी द सिलेबस। ASP. ओके, सो यहाँ पर लॉगिन कंट्रोल ही खाली दिया है। यस, and we can say these are the first control what we learn above.
that is only the login control. Yes, and others are, we can say, these are the controls, and this one is the login control. Yes, so we have to learn only this control, and other controls that we don't have to learn. Yes, so I hope that I can skip this particular controls and strike out. If you want to read, then you can refer these particular notes. So I am not wasting my time here, and not your time, for explaining to you student that all the what are the theory and what are the concept of this particular control. I am going to strike out this. Yes, so you can refer, but it is not important for the exam point of view. Yes, what is the important? The important one is only that you have to just refer the, what we can say, login control, only single one login control. Yes, so these are not, again I am repeating, these are not we have to include in the reading part. Yes, so what we can say, unnecessary loading आपका नहीं होगा. पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ सकते हो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको आप लिख सकते हो. यस, सो बाकी का मैंने निकाल दिया है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग. यस, और एरर हैंडलिंग. एन एक्सेप्शन हैंडलिंग, इट इज व्हाट, एन अनएक्सेप्शन is unexpected error or a problem. What is the exception? We can say exception is what? It is an unexpected error or problem during the execution of the program, that is called as a exception. Yes, exception handling क्या होता है? Method to handle the error and solution recover from it. So program can run smoothly. Yes, अगर हम किसी भी एरर को हैंडल करते हैं या कोई मेथड थ्रू हैंडल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन हैंडलिंग. यस, वी हैव two different type of exception handling or error handling. Things are available. First one we can say unstructured error handling. यस, ये सेम चीज हम VB.NET के अंदर भी लर्न कर चुके हैं, वही सेम चीज है. अनस्ट्रक्चर एरर हैंडलिंग क्या होता है? It is implemented with the on error statement. Yes, which is place of a code block to handle all possible exception. Yes, जहाँ पर हमारा कोड ब्लॉक है वहाँ पर उसके ऊपर हमें ऑन एरर वाला स्टेटमेंट लिखना है. Yes, so during the execution of the program, if the any error are occur, then it can be handled, yes, by using this on error statement. On error statement are used to set the enable an error handling routine or disable an error handling routine, or specify where to branch the code in the event or of an error. So when the error will come, so what the code will do? It will jump to another line, or it can disable the error, or execute the next line. Yes, so that can be set here on error statement. Yes, we have a different kind of options are available. First one is the on error go to. We have to give the line number. Yes, if you give the line number, then particular line number, the error will jump and it will display your message. Yes, if you write down 0 or -1, it will disable your error. Yes, and it will continue from the next line. Same thing resume next will do. What the resume next will do? It will disable your error, and it will execute the next line. Yes, from where the error will come. Yes, so we can say that in the programming, how this can be implemented, that we learn. Yes, so you can easily understand, but not now. Structure error handling. What is the structure error handling? It is a error handling way
in which you can handle your error in systematic, or we can say structure way. Yes. Why it is called a structure way? Because it have a try, catch and finally block. Yes. We can write the code between the try and catch. Yes. what जहाँ पर एरर आने वाला है तो वो पर्टिकुलर कोड वी कैन राइट इनसाइड दिस पर्टिकुलर ट्राई एंड कैच ब्लॉक. Yes. And finally we can say it is a optional block. Yes, it can be if you write the finally block, then the statement will execute. Definitely it will execute whether the error will come or error will not come. This block will be going to be execute, but it is not a compulsory block. The compulsory block are the try and catch. Yes, inside the try we have to write down steps of code in which error will occur. Yes. And inside the catch we are going to catch the exception, or we can say we can handle the error inside the catch block. Yes. And throw, what is the throw keyword here? Throw, by using the throw keyword we can say it can when the error will come, then you can manually throw your exception. Yes, by using the throw block, or we can say throw keyword. So these have the syntax try catch. Yes, here you have to write down the code in which error will come. Yes, and this one is the catch, optional filters, so you can catch the any number of errors, and there are more than one catch block can be also available inside the we can say this structure error handling. Yes. And finally, yes, finally it is optional, it will execute whether the error will come or not come. And the try statement and with the end try statement. Here I write down one code inside which we can say that try integer 1, integer 2, integer 1 is equal to integer 2 divided by 0. So we can say it will display what? Cannot divide by 0. Yes. और so यहाँ पर क्या होगा, ये एरर आएगा और यहाँ पर ex क्या है, ऑब्जेक्ट है एज अ एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, एंड इट विल कैच द एरर and it will display what the error message. Yes, it will display here. And finally यहाँ पर हमने लिखा है exception is handle. Yes, और try end होता है end try से, और ये सब का end सब है. Yes, so these are the try and catch block. So I hope that all you students are understand. Yes, and we can say there are few topics are remaining inside the ASP.NET. Yes, that we learn later. Thank you.